and you can give the introduction. All right. A very good evening to everyone. So, on the occasion of World Diabetes Day, I'll be giving you something about the basics of diabetes. Uh, why is it important to know about diabetes? Is because we've got a lot of patients with diabetes right now. We are Okay. having around 75 million patients with diabetes. By Yeah. 2045, it is expected that we'll go up to 125 million. So we are second after China, but by 2045, we'll rank first in the number of patients with diabetes. Now, along with diabetes, you will get more complications. You'll get heart disease, you'll get eye disease, you'll get kidney disease, you have amputations. So it is very important that you take your diabetes very seriously because if you take diabetes seriously, you can manage your blood glucose levels very closely, you will have less complications. So, in fact, one thing that is very important is the growing obesity in children. I routinely have started seeing children 5 years of age, 70 kg, 80 kgs, who will get type 2 diabetes. Otherwise, type 2 diabetes is a disorder that is seen after around 40, 45 years of age. But now children as young as 10 years are getting type 2 diabetes because of faulty food habits. So parents have to be more careful about, feeding their children no junk food, but they should feed their children better healthy foods and snacks, fruits and vegetables. Salads should be part of their healthy diets. So this is what I will be talking about. How do you screen for diabetes? If you do not have diabetes, how do you come to know that you have diabetes? Because in India, around 52% of patients with diabetes do not even know that they have diabetes. And around 10% patients have what is called pre-diabetes, which has got a very high conversion rate to type 2 diabetes. So, apart from type 2 diabetes, there are a lot of other type of diabetes like type 1 diabetes, pancreatic diabetes. I'll not be talking about them because they are very rare. Then we'll talk about the treatment, diet and exercise are very important components of the treatment of type 2 diabetes. We'll talk about drugs and how do you monitor your glucose levels. We've got new devices now for monitoring glucose levels and what are the complications of type 2 diabetes. So, if you do not have diabetes, why do you want to get tested? We are a high risk population. Indians, if you look at this data, Indians are high risk population. So, anyone who's got a body mass index of more than 25 is not physically active, has a first degree relative, parents, brother, sister, son, daughter with type 2 diabetes. Being of Indian origin itself puts us at risk of diabetes. Females who have delivered babies more than 9 pounds or had diabetes in pregnancy, blood pressure more than 140, 190, cholesterol, good cholesterol, HDL less than 35, triglycerides more than 250, polycystic ovary syndrome, wherein there are many cysts in the ovaries. If a female has that, that also increases the risk of having type 2 diabetes. A1C normal, that is the 3 months ka blood sugar level, is less than 5.7. If you have more than 5.7, then again you are at risk for diabetes. History of heart disease, you should always be very careful. In fact, screening for type 2 diabetes should start at 45 years for everyone, but for Indians, it should start at around 35 years of age. If you get a normal result, Americans say that you should repeat every 3 years, but you should repeat it every 1 year. But if you have pre-diabetes or high risk, then you probably will have to repeat more commonly. Children, I'll not be talking about. This is what you have to do. Whenever you have a suspicion of type 2 diabetes, you should always get a fasting glucose level. If it is more than 126, after 8 hours fast, it basically means you have diabetes. If 2 hours after taking 75 gram glucose, anhydrous glucose, the glucose levels are 200 and above, then also you have diabetes. The 3 months average glucose levels, if it is more than or equal to 6.5, it again is diabetes. And if you have symptoms of diabetes like increased thirst, increased urination, weight loss, and your random glucose level is more than or equal to 200, then again you have type 2 diabetes. So type 1 diabetes is insulin dependent. Type 2 is the most common type of diabetes. Gestational is during pregnancy, and the other rare causes of diabetes I've already said. So in diet, it is not about taking only sweets that you'll get diabetes. You can get diabetes if you eat a lot of fried food because they have a lot of calories.
So diabetes is not a disorder of increase, taking more sweets. It is basically a disorder of increased calorie intake. If you take more calories, do not burn those calories, then you get diabetes. So in carbohydrates, you have to start taking a very balanced meal. You cannot skip carbohydrates. Some people come back to me and tell me that they have stopped taking chapatis. They have stopped taking wheat. That should not be done. You should have a balanced diet. Your carbohydrate content can be from whole grains, vegetables, fruits, legumes, and dairy products. Be sure that you take dairy products, but the double toned or the cow's milk, because that has less fat and has got good calcium content. Do not do take a good amount of fiber that is lower in glycemic load. That does not increase your glucose levels. Proteins should also be in adequate amount because they are very important for your muscle health. Take monounsaturated fats like mustard oil, sunflower oil, safflower oil. Do not take butter and ghee. You can take fatty fish, nuts, and seeds. Micronutrients, herbal supplements have no role. The sodium content, that is the common salt, you should take less than 2300 milligram per day. You may require further reduction with coexisting blood pressure if you have. Alcohol can cause increased glucose levels and also can decrease glucose levels. So be very careful if you're taking drugs like insulin or drugs that increase insulin secretion. You should always know that what to do when you have low blood glucose levels, that I will be telling you after some time. Physical activity is very important. Yoga is not physical activity. You should have at least 60 minutes of physical activity per day. 150 minutes is older criteria per week. You should walk at least 300 minutes per week cumulative. Do not leave 2 consecutive days without exercise. So if you exercise Monday to Friday, leave Saturday, Sunday without exercise, the benefit is decreased. Even if you exercise on alternate days and you cumulative have 300 minutes per week exercise, then you get the benefit. Resistance training in the form of building, getting some weights and squatting and all can be done twice a week, but you have to have some aerobic activity to be done every day. This slide is an old slide that tells you that we've got a lot of drugs now for treatment of type 2 diabetes and the complications of type 2 diabetes. So your physician would decide which drug is the best for you, which is the most effective drug for you, which drug would carry low risk of decreasing your blood glucose levels to very low levels, which drug would decrease your weight or increase if you need increase, what is the cost of the individual drug, what is the side effect of the drugs. Now, regarding whenever you're taking some medications for diabetes, you have to monitor your glucose levels also. So how often would you monitor would depend on whether you're taking oral drugs or you're taking insulin. So that would depend on your good glycemic control and treatment regimens. A1C, that is the average of 3 months glucose levels. Twice a year if you are doing good in your glucose levels, but if they're not doing good or change in medications is there, every 3 months has to be done. Continuous glucose monitoring system is a newer device. I will be telling you about this also. So this, you can see a lot of glucometers available in the market. So it is very important that you can use any of these, but do try and calibrate these glucometers with the lab value. So whenever once a month, if you go in for a fasting and a post-meal glucose level from the lab, take your glucometer along and measure the glucose level at the same time as the lab person takes a sample, but do not let the lab sample that the lab person has taken to put on the glucometer. You have to take it from your finger itself at the same time when you are taking a lab sample. What are your goals? The glucose levels, 3 month glucose levels should be less than 7. But as your age increases or you have more complications, the glucose levels can be increased, the levels can be increased, or the goal can be increased to 7.58, even 8.5. The pre-meal glucose level should be 80 to 130. And the post 2 hour meal glucose levels can be anywhere between 80 to 180. These are not fluctuations in glucose levels because you do not take the same meal every day. You do not walk the same every day. You don't have the same amount of stress or sleep every day. So glucose levels will not be the same every day. So even if the pre-meals are between 80 to 130, we're happy. 80 on one day, 130 on the next day, we're happy. The 2 hour post meal, 80 to 180, one day 80, next day 180, we're happy with that also. If younger people, we are more stringent with glucose levels. We want them to be around 100. Elderly people and people who have more complications will be even happy at 130, 140 before meals and 180 after meals.
It is not only glucose levels that make a difference, it is your blood pressure also that has to be brought down to less than 140 by 90. But if you are at high risk, probably your doctor would say that you have to get down your blood pressure to 110/70 or even 100 by 70. Heart disease, kidney disease, and liver disease, the drugs diet would be changed for you, that your doctor would be the best person to tell you. So, what exercise you can do, always discuss with your doctor if you plan to do exercise. Regarding cholesterol levels, look at the good cholesterol, that is HDL. For males, it should be more than 40. For females, it more than 50. The only best way to increase your cholesterol, good cholesterol level, is by exercising. LDL and triglycerides are the bad cholesterol, so LDL should be less than 100. But if there is heart disease, it can be brought below 70 also. Triglyceride should be less than 150 milligram per deciliter. Diabetes has a lot of complications if it is not controlled. It can involve the small blood vessels as also the large blood vessels. So if it involves the smaller blood vessels, they're called microvascular complications, which are involvement of the nerves, where you can have pinprick sensation, you can have pain, you can have numbness in your hand and feet. That is called neuropathy. You can have involvement of the eye, you can have involvement of the retina. That is the part where light falls in the eye and it is conveyed to the brain. That is called retinopathy. Then you can have nephropathy, that is involvement of the kidneys. When you have involvement of the kidneys, that can happen in either, just an increase in serum creatinine, that is your renal kidney function test, or an increased amount of protein in your urine. So if you feel that when you urinate, your urine is more frothy, you should always tell your doctor about this so that you can get tested for protein in urine. If the big blood vessels are involved, you can have heart disease, heart attacks can be there. You can have strokes, that is basically involvement of the arteries or the blood vessels of the brain. You can have peripheral vascular disease, that basically means your feet and hand can be involved, more likely feet, wherein you can have gangrene and you can have amputations also. On treatment, it is very important to know what are the signs and symptoms of low blood glucose levels, that is called hypoglycemia. So whenever you have hypoglycemia, you may feel that your heart is racing. You may feel that you have extreme diaphoresis. You may feel that you're drenched in sweat. You may feel that your energy is drained out. You may feel unconscious. You may feel that you have blurring of vision. So at this time, you should take 15 grams of glucose, that is 3 teaspoons of glucose or Glucon-D in 100 ml water every 15 minutes till your glucose levels go above 70. And this has to be done till the time you're conscious. If the not unconscious, you have to go to the hospital where you'll be given IV glucose and you'll gain consciousness. Glucagon injection is not very commonly available in India. This is what I was talking about. As your age increases, your A1C targets would change. So 7.5, 8, 8.5. In very poor health, 8.5 also is acceptable. And you can see the fasting glucose levels also acceptable till 180, and the post meal levels are acceptable till 200 also if the health status is not very good. So overall, diabetes is a disorder that involves all areas, all organs of the body. You have to be careful about controlling your blood glucose levels, but concomitantly, there has to be good control of your weight. You have to exercise well, have to follow good dietary pattern. Your blood pressure, your cholesterol also have to be under control. A lot of new drugs are available now which can decrease the risk of complications also and have good control of your glucose levels and also cholesterol and blood pressure, that you should discuss with your treating physician, and you can modify your treatment that way. Thank you very much for the patient hearing. Any questions, probably I'll be very happy to answer. अ, जिन सीनियर सिटीजन ने भी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। ML सिंह, आपने हैंड रेस किया है? ML सिंह जी, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर अपना स्क्रीन पे हैंड रेस कर सकते हैं, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी जी जी, अब हो गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अंकल जी, बिल्कुल आ रही है। मेरी एज है 76 और मेरा शुगर लेवल भी ज्यादा रहता है और बीपी भी हाई रहता है। बीपी मेरा 180 तक
जाता है, और ये जनरली 170, 180, 160 इतना रहता है ये। और शुगर लेवल भी थोड़ा ज्यादा रहता है, 130 के आसपास फास्टिंग में। नहीं, आपकी उम्र में आपका ब्लड प्रेशर तो काफी ज्यादा है, वो 140 150 तक तो एक्सेप्टेबल है, उसके बियॉन्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी हाँ मेडिकेशंस को चेंज करना पड़ेगा। आप अपना नमक भी चेंज कर सकते हो, लो सॉल्ट डाइट मिलते हैं काफी सारे। आप जो नमक लेते हो वो जी टाटा सॉल्ट आता है, टाटा सॉल्ट लाइट या टाटा सॉल्ट सुपर लाइट। उसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल में आ सकता है। शुगर्स आपकी खाली पेट अगर जी 130 140 तक रहती हैं और भरे पेट 200 तक भी रहती हैं, तब हम लोग उनको एक्सेप्टेबल मान लेंगे, क्योंकि जी आपकी एज 76 है। बट ब्लड प्रेशर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने अगर अपनी कोई जांचें नहीं जी कराई, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन और अपना हार्ट की जांच नहीं कराई, वो करवा के यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, ताकि आपकी हम ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस को चेंज कर पाएं। ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्टर है। जी। तो ये डॉक्टर को कंसल्ट मैंने किया था, डॉक्टर कंसल्ट भी किया, मेडिसिन भी चल रही है मेरी वैसे। और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा हाई था पहले, अब कितना मेरे को याद नहीं है वैसे। कोलेस्ट्रॉल का भी थोड़ा हाई आया था। तो ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा है, रेगुलर है मेरा ट्रीटमेंट। वो आपको लेकिन अपना ब्लड कंट्रोल प्रेशर का का ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। आपको ब्लड प्रेशर आपका काफी ज्यादा है, अगर 180 टच करता है तो वो एक्सेप्टेबल जी, नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, मॉर्निंग में मेरा ब्लड प्रेशर कम रहता है, तकरीबन 115 और नीचे 70 और या 120, 74 समथिंग लाइक दैट। लेकिन शाम होते होते ना वो बढ़ जाता है। शाम होने के बाद में 145 भी आ जाता है, 145 और एंड नीचे का तकरीबन 84 85। देखिए, नॉर्मल नॉर्मल लोगों का ब्लड प्रेशर सुबह का ज्यादा रहता है, रात का कम होता है। लेकिन कुछ लोग, हम लोग बोलते हैं कि शाम का ब्लड प्रेशर यूजली कम रहता है, उनको हम लोग डिपर्स बोलते हैं, डिप करते हैं इनका ब्लड प्रेशर। सर लेकिन बीच में आवाज आ रही है। कुछ लोग नॉन डिपर्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर सुबह ठीक रहता है और शाम को बढ़ जाता है। जी उनके लिए मेडिकेशन जो है, हम लोग ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन मॉर्निंग में देते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर शाम का ज्यादा रहता है, तो आपको मेडिकेशन हमें शाम को देनी पड़ेगी ज्यादा, और सुबह की मेडिकेशन थोड़ी कम रखेंगे। डॉक्टर साहब, मैं मेडिकेशन में टेल्मा एम लेता था। टेल्मा एम पहले मॉर्निंग लेता था, अब मैंने उसको शाम को शुरू कर दिया है। शाम को करने से मुझे तो बेटर तो है। तो क्या ये ठीक है? मैं तकरीबन 3-4 बजे तक लेता हूँ, मैं उसमें मेडिसिन आप लेता ये हूँ। कर सकते हो, टेल्मा एम को आप ब्रेक कर सकते हो। टेल्मा सुबह ले लो आप, 40 मिलीग्राम जो भी लेते हो आप, और एम को शाम को ले लो। उससे आपका अच्छा, कंट्रोल ज्यादा स्मूथ रहेगा। आपका ब्लड ओके। प्रेशर शाम का तरह रहता है। नींद में जब आप सो जाते हो, तो वैसे भी सब लोग का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। अपनी टैबलेट सुबह, अगर टेल्मा एम को सुबह की जगह शाम करोगे, तो शाम का जी ब्लड प्रेशर ठीक आएगा। लेकिन नींद में, क्योंकि आपका व्हेन यू स्लीप आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है, तो ज्यादा कम होने जी। के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें बेटर ये है कि आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। आप अपने डॉक्टर से बात करिए एक बार, और अपने टेल्मा एम को स्प्लिट करके, 2 टैबलेट्स में स्प्लिट करके, एक सुबह एक शाम कर सकते हैं। डोज आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपकी ओके, टैबलेट स्प्लिट हो जाएगी। तो टेल्मा मॉर्निंग ले लें, टेल्मा 40 एंड एम जो है एल्मोडिपिन शाम को ले लें। हाँ, वो ठीक है, डिपेंड भाई करता है मैं कि आपका किडनी फंक्शन कैसा है, क्योंकि टेल्मा देते हुए हमें किडनी फंक्शन का ध्यान रखना काफी जरूरी है। किडनी फंक्शन तो ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा जो मैं चेक कराया था उसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हाँ, है किडनी। वो जैसे पोटेशियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेल्मा से पोटेशियम बढ़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो नारियल पानी वगैरह थोड़ा कम पीना है आपने उसमें। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मंजुला शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट हैं, आप अपने साइड पे क्लिक कीजिए, ओके का बटन होगा, या यस कीजिए। हाँ जी, डेफिनेटली। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरे मिसेज का बीपी विद मेडिसिन कंट्रोल में है, और शुगर टेस्ट कराया था तो आफ्टर मील्स 190 आया था। आफ्टर मील्स नहीं, बिफोर, तो सुबह के टाइम खाली पेट वाला। नहीं, खाली पेट वाला, एम्प्टी स्टमक वाला माने कि। तो इसमें एक डॉक्टर ने बताया था कि लीजिए, तो shall we continue with this?
आपका अगर पहली बार शुगर 190 के आसपास आया है तो ज़रूरी है कि आप अपना ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद का टेस्ट कराएं, क्योंकि मेडिकेशन जो हम लोग देते हैं आपको, कुछ मेडिकेशंस खाली पेट शुगर को कम करती हैं, कुछ भरे पेट को कम करती हैं, कुछ दोनों को कम करती हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम आपका एक 3 मंथ्स का HbA1c कराएं और एक ग्लूकोज पी के आपका टेस्ट कराएं कि 2 घंटे बाद की शुगर कितनी आ रही है, तभी डिसीजन हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाई देनी है, जो खाली पेट शुगर कम करती है, भरे पेट करती है, कि या दोनों दोनों को कम करेगी। आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है देखने में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी, क्योंकि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो इंसुलिन आपकी काम नहीं कर रही होती, अगर आपका वेट कम है तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बार अपने पूरे टेस्ट करा के, वो एक बार जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन उनसे मिलना चाहिए, और ग्लूकोज पी के 2 घंटे बाद का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। नवीन सिंह जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था, आई एम सॉरी, आप करिए प्लीज, आप गो अहेड, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, मैं सेल्फ नवीन सेठी, मेरी आई एम ए पेशेंट ऑफ JBG2 2003, और मेरी शुगर जो है पीछे थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, और अब जो है मेरी दवाई मतलब कल रात से मैंने शुरू करी है एल्सिटा 50/1000 एंड डेप्रिल 10। तो उसके जो है सुबह फास्टिंग शुगर मेरी आई थी 120 एंड PP आई थी 130, BP वगैरह मेरा इट इज क्वाइट ओके, कोलेस्ट्रॉल इज क्वाइट ओके, किडनी इज क्वाइट ओके, एवरीथिंग इज क्वाइट ओके, एंड HbA1c ये जो है आज मतलब 10 दिन पहले जब मैंने सारा पूरा चेकअप कराया था तो उसमें 7.5 आया था। पहले मेरा जो है उसमें साथ में मेरी HbB गिरा था जो 7.5 आ गया था, जो अब मेरा 11.5 है। HB बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन? हाँ जी। आपका जो HbA1c है वो आपकी एज कितनी है? 68, एंड एरोज आप स्टार्ट कर दी थी, 3 महीने ली थी, फिर बंद कर दी थी, फिर दोबारा से स्टार्ट करी है। मेडिकेशन ले लीजिए, क्योंकि आपका वेट तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, हाइट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही वेट है नहीं, आपका। मेरा वेट जो है पीछे 12 kg लास्ट जनवरी में मेरा गिरा था, एंड सब कुछ लूज हो गया है मेरा जो है वो वेट भी, कपड़े भी, सब कुछ जो है उसमें कोई भी चीज जो है काम नहीं आ रही। खैर एनी और कंट्रोल है मेरा काफी कुछ उसमें जो है, मैं अपने हिसाब से जो है एवरी थर्ड डे आई एम चेकिंग, जहां मैंने 4th डे किया तो शुगर बढ़ जाती है मेरी। आपका एल्सिटा और डैपरिल दोनों आपका वेट कम कर सकते हैं अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो। डैपरिल आपका वेट कम कर सकती है, क्योंकि डैपरिल आपके यूरिन में ग्लूकोज को बाहर निकाल देती है। अपनी शुगर आप हफ्ते में एक बार चेक भी कर सकते हो। एक संडे को आपने बिफोर ब्रेकफास्ट टूर आफ्टर ब्रेकफास्ट कर ली, अगले संडे बिफोर लंच टूर आफ्टर लंच कर ली, अगले संडे बिफोर डिनर टूर आफ्टर डिनर कर ली। सर एवरीथिंग हैज बीन डन, सर एवरीथिंग हैज बीन डन, जो आपने बोला मैं पूरा जितना कंट्रोल करता हूँ शायद, और मेरी डाइट भी स्टैटिक है, एवरीथिंग इज स्टैटिक। इंसुलिन इज पहले मेरी 32 थी और उसमें शाम की जो है 12 थी, लेकिन अब मेरी 28 एंड 4 है। 28 एंड 4 क्या है? Novamix 30, 28 units in the morning and 4 in the evening. आपकी इंसुलिन जो है हम लोग 2 बार की जगह 1 बार कर सकते हैं। आपकी मेडिकेशंस तो बहुत कम चल रही हैं, आपकी थोड़ी सी मेडिकेशन इंक्रीज करके इंसुलिन हम लोग आपको 1 बार दे सकते हैं। वो आप अपना एक बार चार्ट लेके और बाकी सब रिपोर्ट ला के दिखाएंगे तभी आइडिया लग सकता है। और बाद में आपकी इंसुलिन बंद भी कर सकते हैं। 20 रात को 4 इंसुलिन लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, 4 तो बहुत ही कम है। सर मेरी जो पीछे जो थी बिना इंसुलिन के भी, मेरी जब मेरे साथ एवरी ईयर वंस इन ईयर ये ड्रामा होता है कि मेरी शुगर विदाउट इंसुलिन भी फॉल कर जाती है, शुगर जो है मेरी फॉल कर जाती है। वही आपको बोल रहा हूँ कि इंसुलिन आपकी शायद हटानी पड़ेगी, आपकी वो मिक्स इंसुलिन हटा के हम लोग एक बार सिंगल इंसुलिन कर सकते हैं। आपकी मेडिकेशन को मॉडिफिकेशन चाहिए। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ जी, गुड इवनिंग। थैंक यू। ऐसा पता लगा था, आई मीन मोस्ट पीपल से वी शुड नॉट टेक BP medicine regularly. You should keep changing it after a few years. Is that or is it a myth? नहीं, it is not true. You should take your blood pressure medications regularly. One medication, if it is doing no harm to you and providing you the benefit, should be continued.
you should never leave your BP blood pressure medication all of a sudden, because then there will be a sudden rise of your blood pressure that can lead to a lot of complications, heart disease, brain stroke. Not leaving it, but changing the medicine. Is that also No, necessary? it is not No. needed. As your age increases, probably there may be addition of other medications or increase in dose, because some medications like statins and ramipril, these drugs are very good for the heart as also for the blood pressure. So you do not need to change your blood pressure medications very frequently. You may modify the doses, you may add new medications, but it is not very necessary that you change your medications every few years. Because I was taking Coans D for about 10-12 years, and then I had a problem with the sodium level. The sodium level had gone down very badly. So then I had to change the BP medicine. The doctor said you have to take Yes. this reacts on your sodium. That basically is because you had a side effect to your medication. Your sodium levels dropped because of your medication. That is the reason they changed it. अगर आपका blood pressure ठीक आ रहा है और कोई complication नहीं है, तो we don't usually change your blood pressure medications. Okay. Otherwise तो ठीक है. Now which I've started, it's okay. Thank you, doctor. Thank you. उसको OTP कहाँ से मिला? बोला था। आप अपनी स्क्रीन पे टच कीजिए, ओके क्लिक कीजिए। वेद कुकरेजा जी, और कोई सीनियर सिटीजन अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉक्टर जी से? वेद कुकरेजा जी, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे ओके टच का क्लिक कीजिए बटन। और कोई सीनियर सिटीजन? ठीक है, थैंक यू। Shall we end? And Yeah, okay. Thank you so much, Dr. Saket Kant sir ji, for the wonderful and informative session. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसलिए 24/7 और मैक्स हॉस्पिटल आप सभी के लिए यह वेबिनार लेकर आया था। और आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक भी अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज अमंग सीनियर सिटीजन रखा गया था, ताकि आप सबके थोड़े से जो भी हमारे डाउट्स क्लियर कर सके डॉक्टर साकेत जी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साकेत कांत जी, कंसल्टेंट एंड्रोक्रोलॉजी एंड डायबिटीज। Thank you so much for Dr. Saket Kant ji for coming in this platform. Thank you so much Max Superspeciality Hospital. Thank you so much Subham sir, and thank you so much senior citizen for attending the webinar. कर सकते हो? एक क्वेश्चन कर लूं? हाँ, yes, definitely you can ask. 2 ईयर के हैं, उनको पैनक्रियाटिस हो गया, अब उनकी जो डायबिटीज है वो जबरदस्त 400 से ऊपर रहती है। अगर आपको किसी को पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, पहले तो पैनक्रियाटाइटिस का कॉज निकालना जरूरी है। अल्कोहल इज अ वेरी कॉमन कॉज, गॉल स्टोन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, जी। अदर कॉजेज आल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पैनक्रियाटाइटिस होने के बाद आपकी जो इंसुलिन बननी है वो कम हो जाती है काफी, तो इंसुलिन के बिना काम नहीं चल सकता, इंसुलिन से ही शुगर कंट्रोल होगी। और जिनको बार बार पैनक्रियाटाइटिस होता है उनमें जो तली फैट्स हैं, फैट भी खाने में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो भी स्टूल में पास हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग को फैट एब्जॉर्ब करने की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। जी सर। तो उसमें इंसुलिन के बिना काम चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही है। और हम लोग को जो हम लोग दवाइयां देते हैं, या तो वो इंसुलिन को काम करने में मदद करती है या इंसुलिन निकालने में मदद करती है पैनक्रियास से। पैनक्रियाटाइटिस होने के बाद इंसुलिन जब बन ही नहीं रही है तो फिर दवाइयां ज्यादा काम नहीं करने वाली हैं। आपको इंसुलिन पे ही रहना है और इंसुलिन पे ही कंट्रोल होगा। इंसुलिन दिन में 3 बार लगा रहे हैं सब। 3 बार से 3 बार कम पड़ सकती है, हर बार खाना खाने से पहले की इंसुलिन, और एक हर बार खाने से पहले लगाना पड़ता है। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी देनी जरूरी है, जो 24 घंटे से 42 घंटे तक काम करती है कुछ इंसुलिन, वो लगानी भी जरूरी है। उसके बिना कंट्रोल मुश्किल है। 3 बार खाना खाने से पहले और 1 बार इंसुलिन और लगानी पड़ेगी, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, जिसको लगानी जरूरी है। यही चल रहा है जी, बिल्कुल। क्या करूं? तो थोड़ी सी डोजेज आपको बढ़ानी पड़ेंगी। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि इंसुलिन की टेक्निक आपकी ठीक है, इंसुलिन आप लगा रहे हो, गलत तरीके से तो नहीं लगा रहे।
क्योंकि अगर नहीं आप नहीं, वो ठीक चल रहा है, वो सारा मैनेज है। मतलब मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन किया कि भाई क्या कोई और इलाज भी है, क्योंकि पैनक्रियाटिस उनका बिल्कुल डैमेज खत्म हो चुका है। पैनक्रियाटाइटिस के बाद अगर पैनक्रियास पूरा डैमेज है तो इंसुलिन आपके शरीर में बनी नहीं रही है, तो उसके लिए हाँ। आपको इंसुलिन बाहर से ही लेनी पड़ेगी। और तो कोई कुछ नई थ्योरी तो नहीं आई ना इसके अलावा? हाँ जी, कोई नया करिश्मा तो नहीं आ रहा है मेडिकल फील्ड में इसके लिए? अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी वंस अ वीक इंसुलिन आने वाली है थोड़े दिनों में, और इनहेल्ड जी सर। इंसुलिन भी आने वाली है। जो खाना खाने से पहले की इंसुलिन है वो नाक के अंदर वाली भी इंसुलिन आने वाली है अभी थोड़े दिनों में। और जो हाँ दिन में एक बार लगाते हैं, जो 24 घंटे से 40 घंटे काम करती है, हो सकता है वंस अ वीक वाली इंसुलिन भी आ जाए। अभी जी हाँ एक्सपेक्टेड जी है हाँ। अगले अगले ईयर में लॉन्च हो जाएगी शायद। नहीं, वो डॉक्टर भाटिया इस वक्त कंसल्ट में है हमारे, ILBS वाले, उनके साथ ये सारा काम चल रहा है। और इसके लिए पैनक्रियाटिस के लिए तो अमेरिका भी हुआ है, लेकिन वहां से उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते। पैनक्रियाटाइटिस में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उस इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो आप दिल्ली में इतने अच्छे सेंटर हैं, आप जाके बात करोगे तो हो जाएगा। पैनक्रियाटाइटिस में बस आपका बस। बहुत क्लियर होता है कि आप क्या कर सकते हो। बस हाँ थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि अगर पैनक्रियाटाइटिस बार बार होता है, कभी कभार कैल्शियम कम होने के चांसेस हो जाते हैं, और वजन हाँ। कम होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, उनका तो पैनक्रियास बिल्कुल डेड ही हो चुका है ना, बिल्कुल खत्म हो गया तो आपको इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। कुछ नहीं है, उनका पैनक्रियास है ही नहीं अब, एक तरह से वो फिर डेड पड़ा हुआ है। इंसुलिन पे ही रहेंगे वो। डॉक्टर साहब एक थैंक यू चीज सर, मैं एक थैंक यू वेरी क्वेश्चन मच। पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। बताइए बताइए। मेरे को डायबिटीज है 2000 से, हाइपोथायराइड भी है, और बीपी कंट्रोल है, और मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। पर ये डायबिटीज की वजह से 3 मंथ्स की पीछे कराई थी 6.7 आई थी, और ये पिछले कुछ टाइम से मेरा ना ये पंजे जो है ना, पंजों के तलवों में बहुत पेन रहता है। वो आपकी नसें डायबिटीज के कारण इन्वॉल्व हो गई हैं। शुगर तो आपकी काफी अच्छी है, 6.7 आ रही है। हाँ आपकी जी। डायबिटीज के कारण नसें इन्वॉल्व हो गई हैं। आपको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, अच्छा, और पैर का वो बहुत ध्यान थोड़ी रखना मैं पड़ेगा। ज्यादा देर मतलब खड़ी नहीं हो सकती, इधर नी पेन भी स्टार्ट हो गया है, और ज्यादा देर 15-20 मिनट से ज्यादा खड़ी रहो तो पंजों में ज्यादा ही पेन स्टार्ट हो जाता है। वो आपको एक बार न्यूरो के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, जो आपको हेल्प कर पाएंगे। इसमें आपकी नसें खराब हो रही हैं डायबिटीज के कारण। हाँ, नजर पे तो अभी पीछे मेरा ट्रीटमेंट है, दोनों ऑपरेट हुई हैं। एक राइट साइड में दूर का दिखना बंद हो गया था, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी दिखाना है दोबारा फिर मैं मैंने। आपको नसों के डॉक्टर के लिए बोल रहा हूँ, नसों के डॉक्टर के लिए। जो आपके अच्छा पैरों की नसें हैं उनके डॉक्टर के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, अच्छा, किसको दिखाना पड़ेगा? न्यूरोलॉजिस्ट को। न्यूरोलॉजिस्ट को। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछना था। हम हाँ जी, बताइए। बीपी और कोलेस्ट्रॉल के हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसको हम जेनरिक मेडिसिन भी ले सकते हैं? जेनरिक का क्वालिटी कंट्रोल इंडिया में कुछ ज्यादा नहीं है आजकल। अच्छा। दवाइयाँ जो हैं वो ब्रांडेड जेनरिक्स भी आते हैं। ब्रांडेड जेनरिक लेने से थोड़ा सा ठीक रहेगा, प्राइस काफी दवाइयों का कम हो चुका है काफी। तो अच्छा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। आप ब्रांडेड जेनरिक ले सकते हो, लेकिन जेनरिक लेना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, थैंक यू। Thank you so much for the wonderful and informative section, Dr. Saket Kant sir ji. Thank you for coming in this platform. And thank you, Subham sir. Thank you, Max Hospital. Thank you, senior citizens, for attending this webinar. Thank you. Thank you, Okay. Sonia. Thank you, Dr. Sir. Yeah. Dr. Khan, thank you for your advice. सोनिया थैंक यू जी का very थैंक यू। much. Thank you very much. Thank you, थैंक यू Sonia. वेरी मच सर। Thank you so much, Auntie ji.